गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ओवरसीज़ फ्लायर इन्फॉर्मेशन विद कस्टम्स। तो ये आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कस्टम डिपार्टमेंट जो है आपका, रादर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है, उन्होंने जितने भी एयरलाइंस हैं उनको बोला है कि जो भी इंडिया से में आता है या इंडिया से जाता है उनका 24 घंटे पहले हमको जो है आप ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाली गई है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 2022 के अंदर, जिसके अंदर नेशनल कस्टम्स टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर के साथ का जो है एक एजेंसी बनाई गई है। उसके साथ जो है CBIC ने एजेंसी बनाई है और उसके साथ जो है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी 24 घंटे पहले। और अगर वो नहीं शेयर करते हैं तो उनको 25,000 रुपये तक का मिनिमम जुर्माना हो सकता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे PNR नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट का नाम, ये सब चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। तो अब जो है इसलिए ऐसा किया जा रहा है ऑफ कोर्स कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई भी उसको प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूशन करना। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोन डिफ़ॉल्टर्स जो हैं वो इंडिया से, बैंक लोन डिफ़ॉल्टर जो है वो इंडिया से भागने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, जो उस प्रोसिक्यूशन को उसको रोकने के लिए जो है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने अब ये इनिशिएटिव लेने को तय किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है क्या। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑफ कोर्स। एक स्टेचुटरी बॉडी है जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बनाई गई थी। एक्चुअली CBIC जो है वो 1964 में बनाया गया था, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दो डिपार्टमेंट्स में जो है स्प्लिट कर दिया गया। पहला था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। जो इसके चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है वो अपॉइंट करती हैं। और ये बोर्ड जो है आपका CBIC जो है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होता है बहुत सारी सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कस्टम हाउसेज, सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल GST कमिश्नरेट, सेंट्रल रेवेन्यूज कंट्रोल लेबोरेटरी, ये सब भी जो है CBIC के अंडर ही आती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक है आपका। तो 9 अगस्त को आपको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो हुआ था 1942 में। और ये एक डिसेसिव फाइनल फेज ऑफ स्ट्रगल था फॉर इंडिपेंडेंस बाय आर बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो हैं उन्होंने ब्रिटिश राज को इंडिया से जाने को कहा था अगस्त 8 को। और जब ये शुरू होने लगा क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो मतलब 8th 9th के जो टाइम पीरियड था उसमें जो है उनको जेल कर दिया गया विद एंटायर कांग्रेस लीडरशिप। तो इसका मतलब जो अगस्त 9th का जो पीरियड था वो तब लोगों ने अपने आप ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। तो ये ट्रूली एक तरह से पीपल लेड मूवमेंट था जिसको वायलेंटली ब्रिटिश ने क्रश करने की कोशिश की। ये हुआ क्यों था? क्योंकि क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ तो महात्मा गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि फ्रीडम सिर्फ अब तभी आ सकती है जब इंडियंस जो है उसके लिए टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। तभी उन्होंने डू और डाई का जो है वो नारा दिया था ग्वालियर टैंक मैदान पे जस्ट एक दिन पहले 8 अगस्त को। और जो है उसी टाइम अरुणा आसफ अली जी जो हैं उन्होंने ट्राई कलर भी जो है हॉइस्ट किया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड। तो ये आपका साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड टॉपिक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड जो है वो आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स और MSMEs को अगले 6 महीने के लिए फ्री में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब ये इंडिया में 5G इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सारे 5G स्टेक होल्डर्स को कहा है कि 5G टेस्ट बेड फैसिलिटीज़ का जो है इस्तेमाल करो अपनी एक्सपर्टीज़ को टेस्ट करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम जो है 5G को डिप्लॉय कर सके कंट्रीज़ में वाया देयर नेटवर्क। ठीक है, तो इंडिया के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 5G डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है उन्होंने मल्टी इंस्टीट्यूट एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी बनाया था इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड का मार्च 2018 में विद 224 करोड़ रुपीज़। उसी में ही जो है उसी टेस्ट बेड को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए ओपन कर दिया है MSMEs और स्टार्टअप्स को। तो इंडिजिनस 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखते हैं। तो ये 5G टेक्नोलॉजी जो है जिसको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने अप्रूवल भी दिया था कि हाँ इंडिया की जो ये टेक्नोलॉजी है ये मच लार्जर रीच दे सकती है ऑफ 5G टावर्स एंड रेडियो नेटवर्क्स। और इसको बनाया किसने 5G टेक्नोलॉजी को? ये इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी है 5G की। इसको IIT मद्रास,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर बनाया है। अब 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में हम कई बार देख चुके हैं कि ये हमको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगी दैन 4G LTE या फिर 4G टेक्नोलॉजी, और इसकी डेटा स्पीड जो है 100 GB पर सेकेंड तक हो सकती है। लेटेंसी इसकी सिर्फ 1 मिली सेकेंड तक होगी, जो कि बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 4G। तो इसमें लगभग 1 मिलियन डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर आ सकते हैं, और 5G जो है वो लगभग 400 मेगाहर्ट्ज़ तक का जो है वो जो है चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए 5G टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। अब 5G हमारे लिए इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगले अगले डेकेड में जो है 5G जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो चलने वाला है, तो हमारे लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट डेकेड है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लांगिया वायरस। तो ये अब आपका सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी 3 साल हुए हमें नोवेल कोरोना वायरस जब चाइना में मिला था। 3 साल के बाद अब एक और वायरस लांगिया वायरस वहाँ से मिला है, चाइना से मिला है, और 2 ईस्टर्न प्रोविंसेस में उनके 35 इन्फेक्शंस पाई गई हैं। ये एक फॉर्म ऑफ हेनिपा वायरस है। हेनिपा वायरस इज बायोसेफ्टी लेवल 4 पैथोजन है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं ये। इससे सिवियर इलनेस हो सकती है एनिमल्स और ह्यूमंस में, और इनकी बहुत ज़्यादा बायो लेवल, जितना ज़्यादा सेफ्टी लेवल बढ़ता जाएगा इसका मतलब उतना ज़्यादा वो जो है इन्फेक्शन इतना ज़्यादा वो स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसके लिए अभी तक कोई लाइसेंस ड्रग या वैक्सीन नहीं है, और कई तरह के हैनिपा वायरसेस होते हैं जैसे हैंड्रा, नीपा, सिदार, मोजियांग और घानानियन बैट वायरस, लेकिन इनमें से सिर्फ हैंड्रा और नीपा वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं और फेटल हो सकते हैं। तो लांगिया वायरस जो है उससे फीवर हो रहा है, हमने देखा गया है। मोस्ट कॉमन जो मतलब सिम्टम है वो फीवर है, देखा गया है। और लांगिया वायरस को ईस्टर्न चाइना में डिस्कवर किया गया जब सर्वेलेंस की गई उन पेशेंट्स की जिनको फीवर था कुछ टाइम से, तो उनके थ्रोट स्वैब सैंपल से देखा गया इन 35 पेशेंट्स को। उसमें से जो है 26 वो पेशेंट्स थे जिनको सिर्फ यही वायरस था और कोई उनके पैथोजन उनकी बॉडी में नहीं पाया गया। अब इसमें सिम्टम्स क्या देखे गए हैं? ऑफ कोर्स कुछ तो बेसिक सिम्टम्स हैं, फीवर, फैटीग, कफ, नोजिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं जैसे इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन या फिर किडनी फंक्शन भी इम्पैक्ट हुआ है। कुछ लोगों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब आपके प्लेटलेट लेवल कम हो जाता है बॉडी में। ल्यूकोपेनिया, मतलब आपके वाइट ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है बॉडी में। इम्पेयर्ड लिवर, किडनी फंक्शन, ये सब भी जो है एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिली है इन पेशेंट्स में। अब ये वायरस आया कहाँ से है? जनरली ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रैवल किया है। श्र्यूज़ एक तरह से आपके ऐसे जो हैं इंसेक्ट होते हैं जो आपके रैट जैसे दिखते हैं, और ये गोट्स एंड डॉग्स में भी जो है इसको पाया गया है। ठीक है, अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका होता है कि नहीं, इसके बारे में ज़्यादा अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिर्फ 35 ही पेशेंट्स जो हैं वो अभी तक उनको ही इन्फेक्ट किया है इसने। तो अभी बहुत ही कंक्लूसिवली ये कहना कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स इन इंडिया। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने रिसेंटली 10 मोर रामसर साइट्स जो है वो आपके ऐड करी हैं, तो अब टोटल इंडिया में साइट्स जो है वो 64 हो चुकी हैं। 6 साइट्स तमिलनाडु की, 1 ईच इन गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। ये नीचे साइट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको याद रखने की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब रामसर साइट्स जो है वो इंडिया में टोटल वेटलैंड एरिया का 10% कंप्राइज करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रामसर वेटलैंड्स जो हैं अगर आपके कंट्री में ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल फंड्स मिलने लग जाते हैं ज़्यादा। नो, ऐसा नहीं है, बस उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है बिकॉज वो इंटरनेशनली नोन जो है वो वेटलैंड्स हो जाते हैं। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, 1975 में इन्फोर्स हुआ। इसका ये ऑफिशियल नेम बहुत बड़ा है, ये लिखा है द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली एज वाटर फाउल हैबिटेट, और इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है। इसका मिशन है कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स। तो अब इसके अंदर जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स बनाया गया है रामसर लिस्ट के अंदर। अब रामसर कन्वेंशन के अंदर 3 चीज़ों पर, 3 पिलर्स पर फोकस किया गया। एक तो वाइज यूज़ ऑफ ऑल वेटलैंड्स, दूसरा डेजिग्नेट करना उन सूटेबल वेटलैंड्स को, तीसरा है इंटरनेशनली कोऑपरेट करना। ठीक है, तो ये इंडिया में 64, अब ये गलती से टाइपो में यहाँ पर 46 लिखा गया, उसको उल्टा 64 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। सबसे पहली रामसर साइट जो है वो वर्ल्ड में कोबोग थी, कोबोग पेनिनसुला में थी, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था। रामसर कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है, ना ही ये यूनाइटेड नेशंस या उसकी किसी एजेंसी का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायनासोर फुटप्रिंट्स इन चाइना। तो अभी जो है 4300 डायनासोर फुट, ये भी आपका टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी 4300 डायनासोर फुटप्रिंट्स जो हैं हेबाई प्रोविंस ऑफ नॉर्दर्न चाइना में हमको देखने को मिले हैं। तो ये लार्जेस्ट नंबर जो है अभी तक देखने को मिला है लोकेट नॉर्दर्न चाइना में। लगभग 9000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये देखने को मिले हैं। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों तरह के डायनासोर्स जो हैं वो, जिनकी लगभग 15 मीटर तक हाइट होती थी, वो भी जो है वो देखने को मिले हैं। और बहुत से डायनासोर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हुए बिकॉज यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी और ट्री जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थे उस टाइम, उस समय पर। अब ये प्रिजर्व फुटप्रिंट्स, जिनको इश्नाइट्स भी कहते हैं, ये वो फॉसिल ट्रेस हैं जो कि अर्दन मटेरियल्स पर फाउंड होते हैं। और ये क्योंकि अर्दन मटेरियल्स बहुत सॉफ्ट होते थे, तो फुट इंप्रेशन वहाँ पर जो है वो जम गया, धीरे धीरे ड्राई हुआ, हार्डन हो गया, उससे जो है ये इंप्रेशन वहाँ पर फॉसिलाइज हो गया। इससे हमें पता लगा कि ये डायनासोर के फुटप्रिंट हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुहर्रम। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अभी अशूरा मुहर्रम जो है वो रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कंट्री में, और ये प्रॉफिट मोहम्मद जी के ग्रैंडसन जो हैं हज़रत इमाम हुसैन, उनकी मार्टरडम को जो है वो एक तरह से मार्क करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो दे दी थी फॉर ट्रूथ, राइटियसनेस, जस्टिस इन करबला। ताज़िया प्रोसेशन निकाले जाते हैं इस दिन को मनाने के लिए, और मजलिस और रिलीजियस मीटिंग्स की जाती हैं ताकि रिलीजियस स्कॉलर्स इसमें हाईलाइट करते हैं कि कैसे करबला में इंसिडेंट हुआ था जब हज़रत इमाम हुसैन जी ने अपनी लाइफ जो है वो दे दी थी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। तो ये 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जो है वो अभी बकलो जो है आपका हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर की गई है। इसका नाम एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ऑफ कोर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, इंडिया और यूएस आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये एक्सरसाइज जनरली जो है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में अल्टरनेटिवली जो है वो होस्ट की जाती है एनुअली, और एनुअली मतलब हर साल की जाती है, और अल्टरनेट लोकेशंस पे की जाती है। मतलब जैसे जो 12th एडिशन जो एक्सरसाइज का था वो जॉइंट बेस लुइस मैकॉर्ड वाशिंगटन में मतलब किया गया था अक्टूबर 2021 में। ठीक है, तो इस साल जो इंडिया में हुई है, मतलब दोबारा जो है नेक्स्ट ईयर जो है आपकी यूएस में की जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is overseas flyer information with customs. So aircraft operators. So this topic is important for the governance section. So aircraft operators are now required to share all travel-related information about passengers who are going to travel in and out of India at least 24 hours before their flight departure time. So this information will be shared with the Central Board of Indirect Taxes and Customs through this National Customs Targeting Center Passenger, which is an agency which has been established for sharing of this information. So this agency will conduct this risk analysis of passengers, and this has been notified via passenger name record information regulations of 2022, and operators who are not going to comply with this conditions will be fined with a minimum of 25,000 rupees. So what kind of information will be shared? What kind of information will be shared? It will be PNR, passport number, date of birth, travel agency, travel agent, etc. So all these information will be shared with the, of course, customs department. So of course it will also be subject to strict information privacy and protection by the provisions of this regulations. And what is the purpose? Why customs department want this information? So they want to protect, they want to prevent, detect, investigate. They want to prevent, detect, investigate, and prosecute offenses under the Customs Act. And actually, there were certain bank loan defaulters who were trying to flee from the country to avoid prosecution. So that's why this notification is being issued now. So let us see something about Central Board of Indirect Taxes and Customs also. So it is under the Department of Revenue, under the Ministry of Finance, and it is a statutory body which has been established under the Central Boards of Revenue Act of 1963. So CBIC was actually formed in 1964 when the Central Board of Revenue was split into two organizations. The first one, of course, is the Central Board of Direct Taxes, and the second one is Central Board of Excise and Customs. And the chairperson of this CBIC is
appointed by the Appointments Committee of the Cabinet. And this board is also the administrative authority of several other subordinate organizations like Central Excise and Central GST Commissionerate, Central Revenues Control Laboratory, Customs Houses, etc. So this is what CBI says. So the next topic is Quit India movement. So this topic is important for your art and culture section. So on 9th of August 1942, the people of India launched the decisive final struggle for independence against the British Raj, and it was Mahatma Gandhi ji who told the British to quit India. And on August 8th, he gave the slogan of "Quit India" from the Gowalia Tank Maidan in Bombay, which is now, of course, Mumbai. And why did he? Why? What are the events? Rather, what happened during this period? So, on August 8th, he gave this call of quit India, and on before the dawn of August 9, the entire Congress leadership, including him, was put in the jail. But so people were on their own for this movement. So it was basically a truly people-led movement, but it was violently crushed by the British. So why this Quit India movement started? Because the Cripps mission failed, and Gandhiji realized that freedom would now come only if Indians fought tooth and nail for it. So he gave the slogan of "Do or Die." On this 8th of August occasion, Aruna Asif Ali also hoisted the tricolor on the ground. So the next topic is indigenous 5G testbed. So central government has decided to offer the use of indigenous 5G testbed free of cost to the government recognized startups and MSMEs for the next 6 months. And the objective is to boost 5G ecosystem within the country. So Department of Telecommunications has urged all 5G stakeholders to utilize the facilities and test their expertise so that speedily 5G can be deployed and developed in the country. And by keeping in mind the India specific requirements and to take lead in 5G deployment, Department of Telecommunications in March 2018 had granted 224 crore rupees to the multi-institute collaborative project, which was setting up this indigenous 5G testbed, which has now been offered for the stakeholders like startups and MSMEs. So while we're discussing about this, we should also discuss about the indigenous 5G technology. So it's an indigenous technology. We are not dependent on Huawei, Nokia, etc. for the development of 5G in India. So even the International Telecommunication Union has approved this 5G technology for India, and because it facilitates much larger reach of the 5G towers and networks, radio networks. This technology has been developed by IIT Madras, Center of Excellence in Wireless Technology, that is CVIT, and IIT Hyderabad. So you know that 5G technology provides greater flexibility than 4G technology. It has transfer speeds of up to 100 GB per second and latency of just 1 millisecond. So it can also connect about 1 million devices per square kilometer, and it can channelize up to 400 megahertz of spectrum. And it is about machine-to-machine communication because of high speeds, of course. So it will be a boon for Internet of Things and device connectivity. So why 5G matters? Because it's an investment for the next decade, because the world is going towards 5G, and with high-speed data, several industries are interlinked with this technology. So the next topic is Langya virus. So Langya virus is basically a topic for your social issues. So after 3 years of novel coronavirus pandemic, which was first detected in China, a new zoonotic virus has been discovered in 2 eastern provinces of China, and 35 infections have been identified so far. So it is a form of Henipa virus, and these Henipa viruses are classified as biosafety level 4, which means that the more biosafety level increases, the more it means that it is more infectious and it is more transmissible. So it causes severe illness in humans and animals, and currently there are no licensed drugs or vaccines for it. So Langya virus is basically these Henipa viruses are Hendra, Nipah, Cedar,
Mojiang and Ghanaian bat virus, but only Hendra and Nipah infect humans, and they can also cause fatal illnesses among the humans. So Langia is basically known to be causing fever, which is the most common symptom among all these 35 infections which have been reported so far. And how this Langia was discovered? So it was discovered in eastern China, and a surveillance was conducted among the patients who were having a fever, and they were having a recent history of animal exposure. Their throat swab samples were taken, and 30 out of these 35 patients, 26 were those people who were infected only with this particular Langia virus. Okay, and no other pathogen was found in their body. So, what are the symptoms of this Langia virus? So, of course, apart from the usual ones, the fever, fatigue, cough, nausea, etc., thrombocytopenia, which means loss of platelets or low platelet count, leukopenia, which means low white blood cells, and impaired liver and even kidney function are the certain abnormalities which have been reported within these 35 patient group. So from where does this Langia virus has come from? So it has jumped from animals to humans, of course. It was found predominantly in shrews, but it was also detected in goats and dogs also. So is it that human to human transmission of this virus possible? Currently, the sample size, or this 35 patients are the number of 35 patients is too small to make any conclusive statement that it is possible that human to human transmission is occurring, but it is being believed that the transmission in human population would be sporadic and it would not be widespread. So the next topic is Ramsar sites in India. So this topic is important for your environment section. So India has added 10 more Ramsar sites or wetlands. So now the number has gone up to 64. So 6 sites have been identified in Tamil Nadu, one each in Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, and Odisha. So now the total number of Ramsar sites in India stand at 64. So Ramsar wetlands now comprise about 10% of total wetland area in the country, and being getting designated as a Ramsar site does not necessarily mean that you start receiving international funds for the protection of it. It just means that you are, because internationally recognized, so there would be a more degree of protection for the site. Okay. So, what is this Ramsar Convention? So, it's an intergovernmental environment treaty. It was signed in 1971, but it came into force in 1975. This is the official name of Ramsar Convention, the Convention on Wetlands for international importance, especially as waterfowl habitat. So, it is also known as the Convention on Wetlands, and the mission is to conserve and use wisely all wetlands, and it has developed and maintained an international network of wetlands, which is also called the Ramsar list. And the 3 pillars of convention are wise use of the wetlands, designation of suitable wetlands for the wetlands list, and cooperation internationally on transboundary wetlands. Currently, India has 64 Ramsar sites now. The first site in the world to be designated as a Ramsar site was Cobourg Peninsula in Australia, which was designated in 1974. Ramsar Convention is not a legally binding convention, and it is not even part of any United Nations or its specialized agency. So the next topic is dinosaur footprints in China. So this topic is important for your environment section, of course, and scientists have discovered about 4,300 dinosaur footprints in Hebei province of northern China. This is the largest number of dinosaur footprints located in northern China, and they cover an area of about 9,000 square meters. So both herbivores and carnivores dinosaurs were the footprints of both of these dinosaurs were found here, and the length of these dinosaurs could be 15 meter, that is for herbivores, and 4 to 5 meters for the carnivores dinosaurs. And the area may have attracted dinosaurs because of availability of water and trees at that time. And how did the dinosaur footprints become fossils? Because these preserved footprints known as ichnites are the trace fossils. They were found in earthen materials because the earth was very soft at that time, so the foot impression the foot impression started getting hard, and once the material dried and hardened, it helped the impression to become fossilized, and that's what we have discovered in northern China.
So the next topic is Muharram. So this topic is also important for your art and culture section. So Ashura-e-Muharram was recently observed, and it marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussain ji, and his companions, of course, who laid down their lives for upholding truth, righteousness, and justice in Karbala. Tazia processions are taken out on this occasion to mark the this day, and majlis or religious meetings are also conducted where religious scholars highlight the various aspects of Karbala incident. So the next topic is exercise Vajra Pahar. So this topic is important for your security section. So 13th edition of Indo-US Joint Special Forces exercise Vajra Pahar 2022 has commenced, and it has commenced at the Baklo of Himachal Pradesh. And the aim of these exercises is to share best practices and experiences between Indian and American forces, and it is hosted annually, and it is hosted alternatively between India and the United States. So, in October 2021, the exercise was conducted in Washington, that is in USA, and now it is being conducted in India. So, the next exercise that is in for 2023 would be conducted in USA again. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.